अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग चिकन का एक डिफरेंट रेसिपी बना रहे हैं, चिकन रोस्ट। लेकिन ब्लैक चिकन रोस्ट का प्रोसेस बहुत ही आसान है, नवाब्स किचन के स्टाइल में। इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे, चलिए। ब्लैक चिकन रोस्ट रेसिपी बनाने के लिए चिकन को अच्छी तरह वॉश करके रखे हैं। इसी चिकन को हम लोग मैरिनेट करेंगे। पहले इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। इसी चिकन में हम लोग फर्स्ट जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ साथ इसी में हम लोग रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे। नेक्स्ट थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसको और भी मज़े का बनाने के लिए हम लोग इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। चिकन को अच्छी तरह मिक्स करे बाद इसी को हम लोग 30 मिनट्स तक मैरिनेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे। लगान गरम हो गया है, इसी में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। घी गरम होते ही इसी में हम लोग स्लाइस्ड ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियंस ब्राउनिश शेड में आते ही इसी में हम लोग फिर से थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। Next, finely chopped tomatoes. टमाटोस और ऑनियंस अच्छी तरह पक गए बाद इसी में हम लोग रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। इसके साथ साथ ऑल स्पाइसेस पाउडर, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, फेनल पाउडर भी ऐड करेंगे। ऑनियंस अच्छी तरह डार्क शेड में आते ही इसी में हम लोग पहले ही मैरिनेट करा हुआ चिकन इसमें ऐड करेंगे। सारे मसालों में चिकन अच्छी तरह बॉईल होते वक्त ही हम लोग ड्राई कोकोनट को डायरेक्ट कोल पे भून के रखेंगे। एक्चुअली जब ड्राई हम लोग जो रोस्ट बना रहे ब्लैक रोस्ट चिकन का,
वो जो कलर लाने के लिए हम लोग कोकोनट को डायरेक्ट कोल पे हम लोग भुनेंगे और इसको पाउडर भी करेंगे। इन सारे कोकोनट्स को हम लोग पेस्ट में करेंगे, उसी पेस्ट को हम लोग रेसिपी में यूज़ करेंगे। ब्लैक चिकन रोस्ट परफेक्टली हो गया है। इसको और भी ब्लैक दिखाने के लिए हम लोग जो प्रिपेयर करे थे कोकोनट पेस्ट, उसी पेस्ट को इसमें ऐड करेंगे। माशाअल्लाह, रेसिपी तो परफेक्टली बन गया है। फाइनली इसको हम लोग करी लीव्स डाल के और भी मज़ेदार करेंगे। माशाअल्लाह बहुत ही बढ़िया है। जैसे हम लोग सोचे थे घी और चिकन का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार रहता है। इसको जो रोस्ट करे थे हम लोग जो प्रोसेस में, बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही मज़ेदार है, जूसी जूसी है। अगर बगारा राइस के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आप भी अपने घर पे कोशिश करिए। उससे पहले हम लोग नीडी पीपल को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
आज का ये वीडियो देखते ही अपने घर पे कोशिश करिए और आपको कैसे लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। नवाब्स किचन फेसबुक ऑफिशियल पेज पे डेली ढेर सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उन वीडियोस को भी देखिए, एंजॉय करिए। उससे पहले पेज को फॉलो करिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने तक हमारे टीम के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।